रहे हैं आप। और सत्ता में रहने के लिए कुछ लोग इस देश को जला दें और जलाने के बाद राख पर भी शासन करें, उससे भी प्रसन्न रहेंगे। ये लोअर कोर्ट इस देश में आग लगवा देंगे, बता रहे हैं आप। और सत्ता में रहने के लिए कुछ लोग इस देश को जला दें और जलाने के बाद राख पर भी शासन करें, उससे भी प्रसन्न रहेंगे। ये लोअर कोर्ट इस देश में आग लगवा देंगे, बता रहे हैं आप। और सत्ता में रहने के लिए कुछ लोग इस देश को जला दें और जलाने के बाद राख पर भी शासन करें, उससे भी प्रसन्न रहेंगे। Viewers, did you hear that? There's a dangerous pattern of incitement and provocation, and this is not being done by a fringe anti-social elements, but by mainstream political parties. Those who claim to save Samvidhan are the ones betraying the constitutional values. Just like they blame the EVMs when they don't win, the opposition parties are now resorting to judiciary bashing if a verdict goes against the narrative of their ecosystem. The comments by Ram Gopal Yadav, a senior Samajwadi Party parliamentarian and Akhilesh Yadav's uncle, are a reminder of this dangerous pattern of undermining the judiciary in our country. Viewers, let's make no mistake about this. Yadav's statement that lower courts will set the country on fire is not only irresponsible but also a blatant attempt to provoke violence. This is not an isolated incident but rather a continuation of the opposition's trend of berating the judiciary. From questioning Afzal Guru's execution, you would remember, to being in denial about the Ayodhya verdict, the opposition has consistently demonstrated a lack of respect for the judicial process. Yet, they will say, Jai Samvidhan. It's ironic that the opposition accuses the ruling party of undermining the judiciary, when in fact they are the ones guilty of doing so. The opposition's hypocrisy, viewers, is also exposed by their refusal to approach higher courts when they have a problem with lower court verdict. Why can't they go and appeal in higher courts? They are all available for all the remedies. Instead, they resort to this kind of provocative sloganeering statements, which is not only unconstitutional but also dangerous. Viewers, it's time for the so-called Samvidhan saviors, as they like to call themselves, to take a step back and reflect on their actions. They must learn to respect the judicial process and the constitution rather than using them as a tool for political convenience. The country deserves better than leaders who provoke violence and anarchy. Was the lower court setting the country on fire when it gave relief to Rahul Gandhi in the National Herald case? Were the lower courts unfair when Owaisi Jr., Akbaruddin Owaisi, got a clean sheet in the alleged hate speech case? Viewers, I can go on and on with many examples, but sample the reactions and then we open this up. ये लोअर कोर्ट इस देश में आग लगवा देंगे, बता रहे हैं आप। और सत्ता में रहने के लिए कुछ लोग इस देश को जला दें और जलाने के बाद राख पर भी शासन करें, उससे भी प्रसन्न रहेंगे। जनता कोई नहीं चाहती, जनता सिर्फ शांति चाहती है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई। पूरे देश में आग लगाने की बातें हो रही हैं, क्या हो क्या रहा है देश में, प्रधानमंत्री जी को भी देखना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान ले, देश के अंदर हो क्या रहा है, एक पूरी कम्युनिटी को आप कहां ले लगाना चाहते हो, किस साइड लाइन में लगाना चाहते हो। आप उनके धार्मिक स्थल नहीं छोड़ रहे, आप उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर आप नहीं छोड़ना चाहते। आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी आरएसएस वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं, अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो। लोअर कोर्ट आखिर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही है? जो सियासत नरेंद्र मोदी और आरएसएस कर रही है, उससे देश कमजोर हो रहा है। Let's open this up quickly. Sanju Verma, the national spokesperson of the Bharatiya Janata Party. Tushar Gupta, political analyst. Ishkaran Bhandari needs no introduction. Kamruzaman Chaudhary ji also with us. Haji Rangre, spokesperson of the AIMIM. IP Singh Saab, national spokesperson of the Samajwadi Party. And Professor Atikur Rahman completes this panel. IP Singh, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछ रहा हूं, और देखिए लोग ज्यादा हैं पैनल में, तो सब अपने अपने समय में बोलें तो अच्छा होगा, समय बर्बाद नहीं होगा। आपके नेता ये कह रहे हैं कि लोअर कोर्ट्स देश में आग लगा देंगे, क्या आप मानते हैं ये सही है? देखिए, कुछ ट्रायल कोर्ट के जज हैं, उनके बारे में आदरणीय
प्रोफेसर साहब की टिप्पणी थी और आप देखेंगे जिस तरह के हालात संभल में खड़े हुए, जिस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में बीजेपी खड़ा करना चाहती है, कहीं न कहीं संघ के मन में ये बात घर कर गई है कि अब सत्ता मिल गई तो सत्ता किसी भी सूरत में छोड़नी नहीं है। और जिस तरह का माइनॉरिटी पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, अन्य देशों में है, उसी तरह के हालात संघ और बीजेपी उत्पन्न करना चाहते हैं और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पूरी तरह खामोश हैं। अब देखिए, अजमेर शरीफ को खुद माननीय प्रधानमंत्री जी चादर भेंट करते हैं, उनकी कैबिनेट मिनिस्टर तमाम चादर भेंट करने गए हैं, लेकिन इस तरह के हालात उत्पन्न करना, आखिर देश में निवेश कैसे आएगा? नहीं तो कैसे भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी? कैसे हम तीसरी अगर लोअर कोर्ट ने कुछ फैसला दिया है या पिटीशन एडमिट किया है तो आप लोग कहेंगे कि देश को आग लगा देंगे और फिर आप वो किताब लेके बोलते हैं जय संविधान और आप लोग बचाएंगे संविधान। ऐसे बचेगा संविधान? मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए पूछना चाहता हूं सवाल। देखिए आईपी सिंह साहब, एक मिनट। कमरुज़मान जी, राहुल गांधी को जो नेशनल हेराल्ड केस में बेल मिला है वो कौन से कोर्ट ने दिया सर? लोअर कोर्ट ने दिया है। तो क्या देश में आग लगा दिया? Now, Pranesh, what do you want to suggest? You are comparing an individual with the faith of millions of people in this country. This is not a fair comparison. If you want to compare the inaction of the higher courts against the lower court judges, who I believe have been complete in their saffronization. That's why we call them as Sanghi judges. I don't have any qualms in this open forum Sanghi to judges. criticize the judgment that these what judges you are have saying is passed not in bordering contempt. This is contempt. You are saying that this is, that, you know, there are Sanghi judges in a country, Kamruzaman Chaudhary. I'm asking you, giving you an opportunity, do you want to retract what you said and apologize? Because I'm telling you, this will land you in trouble. Sanghi judges, really? I know it land me. No, it doesn't matter. You know, when the MPs of the country have even tweeted on the same words, I'm just repeating what they have said. It's not a word that I invented out here. But the actions in which the weaponization of the history is being done by selective cases being filed in lower courts, getting some favorable judgment within 2 hours, collective conscience of this country, the secular country and the democratic country has been hurt by these two judgments in the last few days. You believe, do you think, one minute, let me ask you this. I'll make it easier for you. Kamruzaman Chaudhary, you are saying you have no faith in lower courts. Why did Rahul Gandhi or the Gandhi family accept the bail that they've got? Mana kar dijiye. Boliye nahi chahiye humko. And by the way, do you believe in Supreme Court, sir? You are comparing an individual I'm not. case. I'm talking about the principle. All of you say, we will save Samvidhan. Is this how you save Samvidhan? By instigating people against the judiciary? When you say things like what Ram Gopal Yadav has said? Lower courts will set the country on fire. Hazi Rangresh साहब, आपके एक बड़े नेता है, अकबरुद्दीन ओवैसी, एक alleged hate speech का केस था, उनको क्लीन चिट कौन से कोर्ट ने दिया सर? कोर्ट ने दिया और कोर्ट का जो है फैसला हम जो है सब लोग मानते हैं, मगर जिस तरीके से अब मैं ये कहता हूं कि जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहते हैं वहां पे उनके घर के नीचे मस्जिद है और जो टाइम्स नो का जो ऑफिस है उसके नीचे भी मस्जिद है और मैं ये केस लेकर अगर अदालत में जाता हूं तो क्या अदालत मेरा केस सुनेगी? क्या सर्वे कराएगी? नहीं तो क्या आपको खुदाई करेगी? अदालत पे भरोसा है? अदालत क्या करेगी ये मैं कैसे बता दूं? आप बोलिए कि आप, मैं जहां बैठा हूं ये वक्फ की जमीन है। जब एक मिनट, जब वक्फ वाले बकवास करते हैं कि पार्लियामेंट में ये है, पार्लियामेंट हमारी संपत्ति है, तब आप लोग कुछ नहीं बोलते? तब देश में आग नहीं लग रहा है? देखिए सुनिए, अरे सुनिए, रुकिए सर, रुकिए। आप ये बताइए, वक्फ बोर्ड जिस स्टेट के हैं वो वहां के स्टेट के जो होल्डर हैं वो दावा करते हैं या कोई मुसलमान दावा करता है, ये बताइए। मैं आपसे बस एक सीधा सवाल पूछ रहा हूं। जब ओवैसी जूनियर को क्लीन चिट मिलता है तब आप बोलते हैं कि कोर्ट सही है। वो भी लोअर कोर्ट थी। सुनिए सर, सुनिए, वो भी लोअर कोर्ट थी जो बैरिस्टर साहब है। एम्प्लॉई है ना। सुनिए, मैं आपको एक बात बता देता हूं। हाजी रंगरेज,
ये गलत बात है। Barrister, नहीं, ये गलत बात है आपकी। Mr. Barrister, नहीं, गलत बात who है does आपकी। not come and speak नहीं, to गलत us, बात है आपकी। he should stop misleading the people because you're playing with गलत fire. बात है, आप सुन ही नहीं इस रहे हैं तरह, हमारी बात। before we get into the political blame game, just on the matter of principle, is this how Samvidhan will be saved? Pranesh, we are on a very dangerous new territory and people are still underestimating the strategy being employed. 2 days ago on your debate, which I later tweeted, I read out certain tweets by so-called journalists Miss Rana Ayyub, Miss Arfa Khanunam, where they are indirectly blaming and some directly other accounts are blaming the former Chief Justice for the violence which has happened in Sambal, not the mobs, not the people taking law in their hand. A judgment in a completely separate case is being blamed for that, and that is painting a target on the judiciary. And these people who do these dog whistles know exactly what they are doing on social media to encourage the mobs on ground. So that I spoke on your channel 2 days ago, in fact your show itself. Now what has happened, we have gone one step above that. We have gone one step beyond that. The reason for it is very simple. When Parliament passes a law, you want to do a Shaheen Bagh so that you frustrate that law, don't let it be implemented. Now that strategy may have worked for a few days or a few months, but that has a threshold limit after which it won't work. So the next strategy used to be that we trust in courts, knowing that courts take its time, they take 3, 4, 5 years for a dispute to be settled. But that time has elapsed. Now judgments are coming, and when judgments are coming which are not in favor, all those people who used to say we have immense faith in judiciary, we have immense faith in judiciary, now are attacking the judiciary and giving very provocative and very dangerous statements for the first time in the history of India on courts directly. And how are you allowing people sitting here using terms like Sanghi judges? We have had a history in this country where a justice of the Bombay High Court who attended the funeral of Guruji was not made a judge of the Supreme Court by Congress government only because he went to a funeral. So that has been the history in this country. And to use such provocative and dangerous statements, I think is a well thought out strategy. I hope the government is monitoring all those people employing that strategy, because this is the final frontier now. Our judiciary is independent, it's strong, it routinely strikes down laws made by the parliament. And by the way, Ishtaran, extraordinary power. Ishtaran, by the way, this is, you know, let's not be misled that this is only entering a very dangerous territory. that this is only an assault on the lower judiciary. Sanju Verma, when Afzal Guru was hanged, what did we hear? It was judicial execution. What did we hear in the aftermath of Yaqub Memon case? Owaisi even refuses to accept the Ayodhya verdict. So they have a problem with the judiciary, not just lower judiciary. You know, Pranesh, taking off from what Ishkaran said, let me put a few facts out there for the benefit of your audience. This entire victimhood narrative that Musalman Bharat mein khatre mein hai, that is a whole lot of balderdash. And I'll tell you why. पहले तो बात करते हैं पाकिस्तान की. In Pakistan, about 3-4 decades back, there were 20,000 Sikhs. हिंदुओं की तो मैं बाद में बात करूंगी. Today there are less than 2,000 Sikhs. In Afghanistan, in the 1980s, there were 200,000 Sikhs. And when the Taliban took over Afghanistan in 2021, there were just 200 Sikhs. 2 लाख से सिर्फ 200 Sikhs, जिनको भारत बचाकर मोदी सरकार किसी तरह लेकर आई when there was mayhem in Afghanistan. Now look at Bangladesh. Hindu population was 27%. That is today down to less than 9%. Look at Karachi. During partition 1947-48 के दौरान Hindu population in Karachi was about 28.29%. Today that is down to 1.7%. तो ये जो narrative है ना कि हिंदू मुसलमान पर अत्याचार कर रहे हैं भारत में, that is a whole lot of balderdash, not only in India but even in neighborhood. Be it Pakistan, Bangladesh, Afghanistan. But now look at West Bengal. About 20 years back, the Muslim population in West Bengal was 1.2 crore. Today the Muslim population in West Bengal is close to 2.8 crore, which is a 133% increase. Now let me tell you what the Niti Aayog has said. Niti Aayog came out with a study a couple of months back. If you recall, we've had debates on this, that in the last 40-50 years of post-independent India, the Muslim population has been growing at the rate of 14% per annum, whereas the Hindu population
has been growing only at the rate of between 1.7 to 2.4% per annum. And this 14% growth in Muslim population in India is not entirely organic. It is due to the incoming Rohingyas. It is due to the incoming Sanju Ghuspechias. Verma, It is look, due to the the larger incoming point is Bangladeshi that migrants. even if the population of a community is going down, does not mean you attack the judiciary like this. Exactly. What last Kamru's... point. Okay, make your point. Quickly make your Yes, point. last point. I am not surprised by Ram Gopal Yadav's diatribe where he says, अरे पूरे देश में ये छोटे मोटे जो जज हैं, ये सारे देश में छोटे छोटे कोर्ट में ये जो छोटे मोटे जज मौजूद हैं, ये तो देश में आग लगा देंगे, संविधान खत्म कर देंगे, डेमोक्रेसी खत्म कर देंगे. दिस इज द सेम राम गोपाल यादव, द अंकल ऑफ अखिलेश यादव. इनके अखिलेश यादव ने क्या कहा था 2014 में? एक जर्नलिस्ट ने पूछा था कि दो छोटी बच्चियों का बालिया में, एक 5 साल की, एक 11 साल की, दे वर सिस्टर्स, उनका रेप हो गया, कुछ बोलेंगे? अखिलेश यादव मुड़कर क्या कहते हैं, वेरी शेमलेसली एंड ब्रेजनली टू द जर्नलिस्ट, अरे लड़कियों का गैंग रेप हुआ है ना, आपके साथ तो सब सही है ना, आपका रेप तो नहीं हुआ. अरे ऐसे नेता आज हमें नैतिकता पर भाषण देंगे. And then even in the face of this, IP Singh will address Ram Gopal Yadav as Adarniya Professor Saab, and Kamru Zaman will say we have Sanghi judges. Tushar, if this is not provocation, incitement, then what is this? Good evening, Tanesh. You know, the irony is when a lot of Samajwadi Congress MPs took oath in the Lok Sabha, and they all are a part of the Indie bloc, as they like to claim, they were waving the Constitution, that we are here to save the Constitution. Is this how they're going to save the Constitution? Today, they are worried that lower courts are entertaining petitions which mean absolutely nothing. Someone on the panel was saying, questioning you rather, on Waqf and how Waqf is dedicating lands and what is decided, what is not. क्या आपको पता है 2013 में एक amendment आया था which changed the Waqf Act, which said the dedication for anything to be classified as a Waqf property can be made by anyone, any single individual, any individual. It was amended from a person professing Islam to any person. तब तो किसी ने शोर नहीं मचाया था. तब तो किसी ने नहीं कहा था कि लोअर कोर्ट्स देश में आग लगा देंगे, यूपीए की सरकार देश में आग लगा देगी. My point is, Pranesh, are we getting to a point where certain opposition, certain political opposition backed by its voting bloc will now start labeling the judges? Today they label the judges, tomorrow they'll disbelieve the judges, day after tomorrow they'll attack the integrity of the judges, and what follows? Eventually, are we heading towards chaos? Because if one pillar of the democracy is going to be assaulted by political opposition of India, we have a lot of reasons to worry. Rahul Gandhi, who leads the India Alliance, should reach out to his partners and say, भैया सिर्फ किताब दिखाने से कुछ नहीं होता, उसको खोल के पढ़िए, उस पर अमल करिए. इलेक्शन जीते तो देखिए राहुल गांधी की हवा है, हारे तो EVM hacked है. Is this not insulting the constitution? Pranesh, tell me, which institution of our holy democracy does the opposition does not insult? Judiciary, they insult. Election Commission, they insult. Mandate of the people, they insult. Where are they going to stop, really? That's my question. They have faith only in United Nations. Only United Nations can do justice for them. Kamruzaman Chaudhary, I'm asking you again, sir. You said Sanghi judges. You know, you're a reasonable man. Would you like to, revise what you said? No, Pranesh, one thing you must understand, the statement about Sanghi judges is not mine. This is made by one of the honorable MPs, Ms. Mahua Moitra. You can check her timeline also. And why she shared this is a matter of concern for all of us. Why such a word against our judiciary should be coming in the first place? I don't intend to hurt any of the judges, esteemed judges of our country. If I have said this, I'm very sorry about it. One minute. The person you are referring to naming, well, I don't want to get too much into it, but I just want to tell you the kind of things that, she's done on TV debates. Would you be repeating that also? So it's not the best example to follow, Kamruzaman Chaudhary ji. Please. So 1 minute. Atikur Rahman, if you have a problem with the judiciary, should you be saying this? That the courts will set the country on fire?
Pranesh, with your kind permission, can I be allowed to quote the Times of India, which is your sister publication? This is not about brother, sister. This is about, we are having a debate. You make your point, sir. You make your point. Thank you. The Times of India editorial reads, it can safely be said trial court judges countrywide can be tone deaf to how sensitive the fallout of their orders can be and perhaps lack the training to know better. A single district judge's decision triggered the spiral into shootings that have claimed 4 lives in Sambal. Pranesh, we are not questioning the judiciary. Every soul in India and our dear democracy in India is suffering because of the lack of sensitivity our lower court judges are having. And why are they having this lower sensitivity? Because the Supreme Court has given a green signal that yes, you can do the surveys. Okay. Why do you want now, to let survey? me ask you this. 1 minute. Let me ask you this. You know, 1 minute. Atikur Rahman, you are saying that this is only about lower courts. By the way, the editorial that you just quoted, I think it's just plain crap. I don't believe it. It is written by edit page writers. It's their opinion, not mine. Otherwise, they would be doing what I am doing. So it is for, person who's written for them to defend. That's their opinion entirely. And by the way, Ram Gopal Yadav is not more erudite than the writers on the edit page there in the Times of India. Does it say that the lower courts will set the country on fire? Let me ask you this. Mamata Banerjee said this about the High Court. Whoever's verdict this might be, I will not name the person, but this is BJP's verdict. This she said, refusing to accept the Calcutta High Court's verdict, striking down the new OBC categorization. Let's talk about the Supreme Court. Asaduddin Owaisi, what did he say about the Ayodhya verdict? It's a black day for Indian judiciary. So, let's not mislead the people by saying this is about lower court. This is your respect for the judiciary in the country. Sanju Verma, the opposition is accusing the ruling party of misusing agencies. Pranesh, there have been so many points that have been made. Let me quickly come to each one of them. First and foremost, let's be very, very clear. The Waqf has been mentioned on this debate. In 1923, the Waqf owned only 3,000 properties. Today is 2024, after more than 100 years. 100 years is not that long a span of time. But look at it. 3,000 properties. Say today the Waqf owns 8.7 lakh properties worth over 1.2 lakh crore, and the total size is 9.4 lakh acres. Ye yaad rakhna, 9.4 lakh acres. After defense and Indian railways, Waqf perhaps has the largest number of properties under its ambit in India. और फिर भी मुसलमान यहाँ पर बैठकर victimhood का नारा 2400 घंटे खेलते हैं. But the more important point is this. Since we are talking of democracy खतरे में है, रामगोपाल वर्मा ने कहा संविधान को आग लगा देंगे. रामगोपाल यादव को कुछ कहना चाहती हूँ. Let's not forget one very important thing. T.N. Seshan, who has been hailed as the poster boy of electoral politics, the former CEC, who's no more. He was the environment secretary under the Rajiv Gandhi cabinet. He was the defense secretary under the Rajiv Gandhi cabinet. And after Rajiv Gandhi's assassination, 3 हफ्तों तक राजीव गांधी की अस्थि कलश लेकर कांग्रेस वाले पूरे देश में उन्होंने भ्रमण किया था to gather a huge sympathy wave which eventually worked to the Congress's advantage. And how was T.N. Seshan rewarded? He was accommodated as a member of the Planning Commission subsequently by Manmohan Singh. तो यहाँ बैठकर जब आप लोग डेमोक्रेसी खतरे में है कहते हो, मैं आपको याद दिला दूं. And maybe Ishkar knows this better than most of us. V.R. Krishna Iyer, F.I. Ribello, Ranganath Mishra, Justice Bahrul Islam, F.I. Ribello, Hasnain Masoodi, ये लोग कौन हैं? ये सब ऐसे लोग हैं who were career congressmen and who were elevated to Rajya Sabha by the Congress party. All that you're saying, Sanju Verma, is documented. Last but not the least, Pradesh, just 10 seconds more. 10 seconds more. You look at the audacity. Today in India, we have 140 crore
population, there is one temple for every 1587 Indians. I did the math, but there is one mosque for every 232 Muslims. 6,50,000 masjid hai. 1 minute, Sanju Verma, viewers, this is not about a mosque or a claim on a masjid. This is about, and let me really make this simple for you. If you have a problem with the lower court, just go to the higher court. That is how the judiciary functions in our country. Just that. This is not about any temple or mosque or church. This is not. Because even on other issues, which are not religious in nature, they have had, bizarre things to say about judiciary. You were talking about one member of parliament. I'm talking about the Bengal chief minister. Look what she says, Kamruzaman Chaudhary. That this is BJP's verdict, not high courts. IP Singh ji, आजम खान जो आपके बड़े नेता हैं, उनको भी 2019 में हेट स्पीच में लोअर कोर्ट ने क्लीन चिट दिया था, उनको अक्विट कर दिया था. तो क्या आग लगा रही थी लोअर कोर्ट तब? ये 17,000 जो निचली अदालतें और हाई कोर्ट में जो लिस्ट जाती है, वो बिना आजकल आरएसएस को दिखाए हाई कोर्ट में कोई जज नहीं बनता, और वही एलिवेट होके क्या बोल रहे हैं जाते सर? हैं. और आप क्या बोल रहे हैं? Do you realize what you are saying? ये गिनाते हैं. सुन लीजिए, एक मिनट बोल लेने दीजिए, एक मिनट बोल लेने दीजिए. अभी बीजेपी के लोग बोलते हैं तो लंबा बोलते चले जाते हैं, पूरा ज्ञान सुना रहे हैं. आप जो सवाल बीजेपी बोल के रहे जो हैं, प्रवक्ता बैठ के ज्ञान दे रहे हैं, उनके कहने का यही मतलब है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी के साथ जो हुआ, बांग्लादेश में जो हुआ, अदर कंट्रीज में हुआ, वही काम भारत में करना है. और एक बात और इन्हें याद दिला दूं कि इन्हें सेकुलर और समाजवाद शब्द से इन्हें दिक्कत है. ये देश का जो फैब्रिक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसे तहस नहस कर देना चाहते हैं. न्यायिक प्रक्रिया का आधार जो है साक्ष्य होने चाहिए. इस तरह के आपके कहने से देश थोड़े चलेगा. संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता है, और सुप्रीम कोर्ट नहीं रहता तो आप संविधान का तहस नहस कर देते. यहां हम सम्मान करते हैं, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इस तरफ इशारा किया है कि केंद्र सरकार और बीजेपी की जो सरकार है, संविधान के साथ छेड़छाड़ न करे. आईपी सिंह जी, देखिए, अब आपको जो बोलना था आपने बोला. मैं आपको इसीलिए रोक रहा था क्योंकि आपने कहा कि जजेस आर अपॉइंटेड बाय द आरएसएस. सर, ये एक संघीय जजेस बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि आरएसएस अपॉइंट करता है. इसका अगर प्रूफ है तो आप सुप्रीम कोर्ट में दे दीजिए, या अगर आप जो न्यायपालिका में बिलीव नहीं करते हैं तो फिर इलेक्टोरल प्रोसेस को बॉयकॉट कर दीजिए सर. मूवमेंट चला दीजिए, जैसे रामगोपाल वर्मा जी बोल रहे हैं, अरे यादव जी बोल रहे हैं. अब तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति छीन लिया प्रधानमंत्री जी ने. हाँ. एक उनके कैबिनेट का आदमी बैठेगा, एक वो बैठेंगे, एक सीजीआई बैठेंगे. जी, तो आपको ईवीएम से प्रॉब्लम है, इलेक्शन कमीशन से प्रॉब्लम है, कोर्ट से प्रॉब्लम है, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या कहा है कि लोअर कोर्ट्स को बंद कर देना चाहिए. समथिंग अलोंग दिस लाइन. इस्टरन. Pranesh, judges give judgments as per law. Unfortunately, they don't come on TV channels or on YouTube, so they can't defend themselves. But we cannot allow such slander to go unchecked, that you call judges either as Sanghi judges or say RSS is appointing judges. If people read, except one particular type of reading they would know, for lower judiciary, they are competitive examinations by which you are appointed. You get marks, nothing to do with even the government. It's an exam. And also we are a unique country where you may not agree with it, but government has almost no role in appointing of judges of High Court or Supreme Court, also because we have a collegium system. Both parties, entire opposition combined together, passed an amendment and the Supreme Court struck it down. So in India, it's the last country you can say any government, Congress or BJP, is appointing the judges. But the more dangerous point, I just finished by such an important point. There is a legal maxim, let justice be done though heavens may fall. You cannot have no justice in matters which are sensitive by saying, no, this will happen, that will happen. Otherwise, you will never be able to decide any important matter in this country. The legal maxim that you're talking about, Ishtaran, has been turned on its head. The new maxim is, according to the opposition, if justice is done, heavens will fall. That is the new maxim. So don't do justice. So don't do justice. Yeah. अतीकुर रहमान, आपको जुडिशरी पे भरोसा है?
सुप्रीम कोर्ट ने जब याकूब मेमन को फांसी दी थी, अफजल Yes, गुरु yes. को फांसी दी थी, आप Ten यस seconds. यस तो बोल रहे हैं, पता है आपको क्या बोला गया था सर? शुड आई रीड आउट सम ऑफ द कमेंट्स? जुडिशियल एग्जीक्यूशन बोल दिया था अफजल गुरु के। Sure, sure. Give me 10 seconds to rebut you. सर then. यू टेक 1 मिनट सर। Thank you. I will now quote the second in command of the Indian government, Mr. Amit Shah, the Home Minister of India. In the Sabarimala matter, he said, आस्था के मामले में कोर्ट्स को इंटरफियर नहीं करना चाहिए. Whose words are this? The BJP spokesperson Sanju Verma should explain to the viewers of Times Now today कि आस्था के मामले में कोर्ट्स को इंटरफियर नहीं करना चाहिए. ये क्यों कहा था हमारे माननीय होम मिनिस्टर साहब ने? संजू वर्मा, सरकार के तहत नहीं होती. I just want to say one thing, Pranesh, what I don't like about this entire Jamaat, and I'm going to use the word Jamaat, is that टॉपिक कुछ और होगा, ये लोग तुरंत अपना विक्टिम कार्ड लेकर टॉपिक से पूरा हटकर बात करते हैं. मैं आपको एक चीज कहना चाहती हूँ. पहली बात, यहाँ महुआ मोइत्रा का जिक्र हुआ. I want to say, should we believe in a lady who sold her soul and her integrity for a bottle of Chanel perfume, a Louis Vuitton bag, and a pair of Ferragamo sandals, who slandered the ethics committee? The ethics committee indicted her. वो वापस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गई. इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कोई भूले नहीं है. She gave a password to Darshan Hiranandani and she is now trying to show that भाई मेरा तो मॉरल हाई ग्राउंड है, मेरे ऊपर कीचड़ मत उछालिए. सेकंड पॉइंट, मैं आपको एक बात पूछना चाहती हूँ. आप लोग बैठकर रोजाना यहाँ पर रोते हैं मोदी सरकार के खिलाफ. अतीकुर रहमान, 31% of PM आवास योजना is allocated to minorities, especially Muslims. आज तक आपने मोदी सरकार की तारीफ की है. 33% of आयुष्मान भारत is allocated to minorities, especially Muslims. आपने मोदी सरकार की तारीफ की है. 37% of मुद्रा योजना is allocated to minorities, especially Muslims. आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ की है. 36% of PM उज्ज्वला योजना is allocated to minorities, especially Muslims. आपने एक बार मोदी सरकार को थैंक यू कहा है, इसलिए भाषण देना बंद अतीकुर करिए. रहमान, कमरुज़मान चौधरी, कमरुज़मान जी आप पहले बोलिए. Basically, Pranesh, the official spokesperson of the Bharatiya Janata Party comes out here. The debate is about something about criticizing the judgment that the judges have made. Now she is coming here and counting the mosques, counting the temples, the ratio with which the population and the mosques all about. She will not This is not answer about what the temples or mosques. Atikur I Rahman said Sahib it, has Kamruzaman asked Chaudhary. about Amit Shah's statement. I said it. This is not about temples or mosques. That's This what is you about did not counter her. No, this is about the larger You did not principle counter her. of berating the judiciary. Is that, and plus this has now gone beyond that. You are inciting people. No, of course. No, this is not incitement. Incitement is Vishnu Jain filing a case on 19th of November. Within 2 hours, he gets a judgment for So going to court, is and this within your 2 no, hours, the 1 minute, SP Kamruzaman ji, is this your Jai Samvidhan model that someone goes to court? That is incitement. But a mob gathers, overpass the administration, ambushes the survey team. But that is democratic. Is this the Jai Samvidhan model? Going to court is now unconstitutional. That's why you say the perception of the judges. Now wait, Pranesh, you must understand the nation's pulse out here. The perception of these two judges, the Ajmer judge and the Sambhal judge, is such across the country today that they are biased and being. But Kamruzaman Chaudhary, look, 1 minute, sir, 1 minute. Let's not play judge and jury here on national television, please. These are sensitive issues. You can't be, commenting on the interest. 1 minute, sir, 1 minute. You can talk about the case. Let's not give judgments on the character, integrity of the judges. Let's not do that. You have a problem with the lower court judge or the reasoning, argument, what have you. Go file a case, sir. Appeal in the High Court. Go to the Supreme Court because, all of you have said, look, we have faith in the Supreme Court. Yet I read out what you've said about the Supreme Court. By you, I mean the ecosystem. हाजी रंगरेज, आप तब से मोबाइल में कुछ देख रहे हैं सर. नथिंग इज चेंज. ओवैसी जी ने कहा था ये ब्लैक डे जुडिशरी के लिए. इज दिस हाउ यू रेस्पेक्ट द सुप्रीम कोर्ट? देखिए
देखिए, अगर ये विवाद अगर खड़ा करना हो तो मुसलमान भी जितने मंदिर हैं बड़े बड़े उन पे अपना दावा ठोक सकते हैं। मैंने कहा बोला ये मंदिर मस्जिद पे कहां ले जा रहे हैं? मैं तो आपको ओवैसी जी पे पूछ रहा हूं। नहीं नहीं, मैं सारे विषयों पर बात करना चाहता हूं ना, क्योंकि मेरा काम है सब विषयों पर बात करना। आपने नहीं, आपका काम है सब विषयों पे, तो पार्टी के फंक्शन में बात कीजिएगा ना। हाजी साहब यहां आके टीवी पे सब विषयों पे जो जिस पे चर्चा चल रही है उस पे बोलिए। आपको कौन रोक रहा है? आप पार्टी के मंच पे बोलिए जो बोलना है आपको। आप ट्रिपल तलाक पे बोलिए, आप निकाह हलाला पे बोलिए, आप सब पे बोलिए, लेकिन यहां पे आप जवाब दीजिए। देखिए, मैं जवाब दे रहा हूं कि जिस तरीके से संघियों का एक झुंड है जो मुसलमानों से नफरत करता है, मुसलमानों की इबादत गाहों से नफरत करता है, मस्जिदों से करता है, मजारों से करता है, मदरसों से करता है, तो जिस तरीके का माहौल, और अभी संजू वर्मा जो बीजेपी की स्पोक पर्सन है वो बहुत सारी चीजें बता रही थी कि मुसलमानों के लिए मोदी जी ने ये किया, ये मोदी जी ने क्या अपने घर से पैसे लाके किया या अपने पैसों से किया? अरे भाई, जो उन्होंने किया वो टैक्स पेयर के पैसों से किया, और वो तो कोई भी सरकार होगी वो भी करेगी, और वो जो पॉलिसी बनती है वो सबके लिए बनती है। तो इस तरीके की जब आप बातें मान करके रहे हैं आप क्या पॉलिसी जो दिखाना बनती चाहते है हैं वो कि सबके लिए मुसलमान जो बनती है, हाँ। तो वैसे जुडिशरी है वो सबके लिए है। अब कमरुजमान कह रहे हैं कि विष्णु जैन कोर्ट क्यों चले गए? अरे कोई कोर्ट जा रहा है उससे प्रॉब्लम है, या जो पत्थर मार रहा है उससे दिक्कत होनी चाहिए? आप लोग कमाल है। वो क्यों गए? देखिए, आपने पूछा पत्थरबाज वहां क्यों गए? पत्थर लेके, कोई बंदूक लेके वहां क्यों गया? अरे सुनिए, आप ये बताइए, जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसका भाग 3 और 4 क्या कहता है? कोई भी इस तरीके की कोई चर्चा नहीं होगी, कोई याचिका नहीं लगेगी, कोई सुनवाई योग्य नहीं होगी, कोई धार्मिक स्थान का करेक्टर एएसआई का नाम सुना है आपने? ये देश हाजी रंगरेज, बिल्कुल ये सेलेक्टिव रीडिंग है। राम गोपाल यादव जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल ठीक एएसआई का नाम है। नहीं, कुछ लोग अपनी तरक्की पाने के लिए इस तरीके के, आप क्या बोल रहे हैं कि जजेस अपनी तरक्की पाने के लिए फेवरेबल वर्डिक्ट देते हैं? अरे सर, बाद में वो क्या करते हैं? बिल्कुल परनेश जी, आप समझ ही नहीं रहे बात मेरी। वो बाद में क्या करते हैं? बाद में वो आरएसएस के उसमें जाके जुड़ जाते हैं, उनकी संघ में, कोई बीजेपी में ज्वाइन कर लेता है जज साहब, कोई राज्यसभा चला जाता है। तो ये क्या हम देख नहीं रहे क्या हिंदुस्तान में? एक बात बताइए हाजी रंगरेज साहब, एक बात बताइए, नंबर बढ़ गया, आप चेक करवाइए अपनी आंखों को। एक बात बताइए, क्या कोई कानूनन ऐसा बार है नहीं, कि आप देखना नहीं चाहते, बार-बार बीच में बोलना, बार-बार कूदना आपका। अरे भैया, बीजेपी के प्रवक्ता, अरे बीजेपी के लोग सवाल का जवाब देंगे, आप थोड़ा खामोश रुकिए। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ हाजी साहब, गुस्सा क्यों हो रहे हैं? अब आप कल पत्थर लेके आ जाओगे, आप बन के बात करेंगे उनकी। कमाल है। मैं आपसे प्यार से सवाल पूछ रहा हूँ, अब आप देखो क्या बोल रहे हैं। गोली चला देंगे, आप तो गोली मार देंगे, ये जाओगे, आप तो पिस्टन तान देंगे मेरे ऊपर। वो गए थे संभल में लोग पिस्तौल लेके। आप जो है डिबेट जिहाद कर रहे हैं मेरे साथ। देखिए, तो आप मानते हैं जिहाद होता है? डिबेट जिहाद कर रहे हैं तो आप मानते हैं जिहाद होता है? मानते हैं आप जिहाद होता है? क्या बात कर रहे हैं? आप मुझे रोक रहे हैं। जिहाद शब्द बहुत अच्छा शब्द है। तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं? परनेश जी, आप मेरी बात मुकम्मल नहीं होते, बार-बार कूदने लगते हैं, बार-बार कूदने लगते हैं। When they have no answers, क्या हो गया? This is what they do. If they are not sparing the judges, but anchor की क्या? I mean, let's leave it at that. Pranesh, but आपने डिबेट में देखा, it started by blaming the judges, calling him Sanghi judges, then it went to RSS appointing judges, then it became about blaming a lawyer for doing his legal duty of going to a court, and then it ends with blaming the anchor or the editor for asking questions on a subject which is under discussion. तो सब गलती पे हैं except those who cannot defend their